Hello students. So today in this session we will discuss a topic of class +1, that is empirical formula and molecular formula, belongs to unit 1, that is some basic concept of chemistry. So first of all I will define what is the meaning of molecular formula and empirical formula, and then we will discuss the numerical. So first of all I'm defining what is the meaning of molecular formula. A chemical formula may be defined in two forms, that is molecular formula and empirical formula. So what is the meaning of molecular formula? Molecular formula represent exact number of atoms of the element present in a compound. That is, for example, if I'm writing the formula for hydrogen peroxide, that is H2O2, it is a molecular formula of the hydrogen peroxide. For benzene, this is C6H6. For glucose, this is C6H12O6, and for methane, this is CH4. Similarly, we can write for any other compound also. So it represents the molecule of the hydrogen peroxide. This is benzene, glucose, and methane. So what is the meaning of empirical formula? Empirical formula represent simplest ratio of the atom, of the elements present in a compound. So empirical formula basically represent the simplest formula. It is also known as a simplest formula. If we know the empirical formula, we cannot easily predict what is the molecule of that particular empirical formula. So if I have to write the empirical formula for H2O2, this will be HO. It means hydrogen and oxygen are in the ratio of 1:1. Similarly for benzene, this is C6H6. This can be represented as a CH in the ratio of 1:1. For glucose, this is C6H12O6, can be represented as CH2O, and for methane, this can be represented as a same. It means a molecule can have the same molecular formula and it may have the same empirical formula. So basically, how to relate the empirical formula and molecular formula? We can relate molecular formula equal to empirical formula if I multiply this with a number n. What is the meaning of n? N is a whole number. This may be 1, 2, 3 and so on. For example, if I have to write for benzene C6H6, it represents its molecular formula and its empirical formula is CH. And if I have to write molecular formula equal to empirical formula, then multiply with n, that is C6H6 equal to CH I'm writing, then multiply with 6. This is C6 and H6. In this form, we can write that the value of n in this case is 6. So this is how we can relate molecular formula and empirical formula. The next point is that in some cases for the numerical, we have to find out the value of n also. So how can we relate the value of n, and what is the n? N is a whole number. We can relate the value of n, or we can find out the value of n by using this concept, that is n is equal to molecular mass. Why I am writing molecular mass? Because molecular formula mass or molecular mass is one and the same thing upon empirical formula mass. So in this way we can easily calculate the value of n. Now I'm going to solve the numerical on the empirical formula. This is how the basic difference between empirical and molecular formula and relation between them, and we can calculate the value of n. So now I'm going to consider how to calculate the empirical formula. In a question, data will be given there and we have to calculate the empirical formula and we have to calculate the molecular formula. So I'm starting with the question. The question is in a compound. The point is how to calculate empirical formula or simplest formula. The point is how to calculate the empirical formula or simplest formula. So I'm starting with a question. The question is in a compound
24% carbon, 12% hydrogen and rest ऑक्सीजन। तो एक कंपाउंड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। डिटरमाइन empirical formula for the compound. So how to write? The format will be same for every question that are based on the empirical formula. So I'm starting with this solution. So very simple. First of all, we have to write the elements which are present in this compound: carbon, hydrogen and oxygen. Then we will represent their masses in gram directly. Carbon is 24 gram, hydrogen is 12 gram and oxygen will be, this is out of 100, that is 100 minus 24 plus 12, that is 100 minus 36. So this value will be 4 and 6, that is 64 gram. Rest oxygen is present, it means बाकी जो हमारे पास है ऑक्सीजन है. Now we have to calculate number of mole. Number of mole can be calculated by using formula given mass by atomic mass. Given mass by atomic mass. This is the step 1, or this is the step 1, represent the given mass in the given percentage directly into the gram. So what is the number of mole of the carbon? Atomic mass is 12, hydrogen 1, oxygen 16. 24 upon 12. Number of mole 2. 12 upon 1, it means this is 12 upon 1, it means there are 12 mole. For oxygen, this is 64 upon 16, this is 4. This is the first step, that we have to represent the given mass in the gram directly. Second is calculate number of mole. Now divide the whole, जितनी भी हमारे पास ये वैल्यू है, divide with the smallest number to obtain the simple होल नंबर. अगला स्टेप क्या होगा, हमने क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप डिवाइड विद द स्मॉलेस्ट नंबर. सारी वैल्यू को हमने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है. एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस केस? 2 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2. दिस इज़ 1, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 2. सो ये जो हमारे पास नंबर आए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर. और यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला. इट मीन्स द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड विल बी कार्बन 1, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 2. इट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है. सो इफ़ हमसे पूछा जाए एम्पिरिकल फार्मूला मास, वी कैन ईजिली कैलकुलेट. एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट. दैट इज कार्बन 12 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2. इन दिस वे वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला मास. सो इन एवरी क्वेश्चन, whenever there is question that is what is the empirical formula or what is the simplest formula, so we have to apply this concept. Convert directly into gram, the number of mole, divide with the smallest number, and this whole number will be a simplest ratio, or that will be a empirical formula. And when in the question there is data given and we have to calculate molecular formula, then how we will find out the molecular formula in that case? This is the format for every question when we have to calculate empirical formula. Next is how to calculate for the molecular formula. So in this, first of all, we have to apply this n. The value of n can be written as a molecular mass upon empirical formula mass. The value of n will be obtained, and then the molecular formula will be equal to n into empirical formula. So empirical formula we can calculate by using the format, and the value of n we can calculate by this. So molecular formula we can calculate easily.
or in the question, sometime in the question there is given vapor density. So molecular mass and vapor density के बीच में एक रिलेशन है, that is molecular mass is equal to 2 into vapor density. You have to keep this point in your mind. Whenever in the question there is given vapor density, and how we will calculate the molecular mass? Molecular mass is twice of the vapor density. And what is vapor density? Vapor density is defined as density of any gas upon density of hydrogen. So this is how we have to calculate for the molecular formula, and for empirical formula we have to use the same format. So next question is there, in which we have to calculate the empirical formula as well as we have to calculate the molecular formula. So question is there, an organic compound on analysis is found to contain. Question is, an organic compound contain 57.8% carbon, 57.8% carbon, comma 3.6% hydrogen, 3.6% hydrogen, and rest oxygen, Now determine the simplest formula. Determine simplest formula. And also find the molecular formula. And also find the molecular formula. Of the compound, and given in the question vapor density given is 83. So this is how we have to calculate. So first of all we will calculate the empirical formula, that is simplest formula, So the format will remain same as we have done in the last question. So carbon is given 57.8%. I will write at 57.8 gram, and carbon is given 57.8. Hydrogen is 3.6 gram, and oxygen will 38.6 gram remain. कैसे करेंगे इसे? 100 minus 57.8 plus 3.6. So remaining oxygen will be 38.6 gram. So this is how first of all we have to represent this data in gram. So given mass, so when we have to calculate the empirical formula we have to use this format, that is carbon, hydrogen and oxygen. Mass is 57.8 gram, this is 3.6 gram, this is 38.6 gram. The second point is calculate number of moles. So how to calculate the number of moles? Simple, given mass by atomic mass. The atomic mass is 12, hydrogen 1, oxygen 16. Number of mole will be 57.8 upon 12. This value will be 4.8 mole. And for this 3.6 upon 1, this will be 3.6. And for this oxygen 38.6 upon 16, this will be 2.4. So हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल आने के बाद यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने सेलेक्ट करना है, उस सबसे और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हमने सबको डिवाइड कर देना है. सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट रेशियो? दिस इज 2.4. सो 4.8 अपॉन 2.4, दिस विल बी 2. 3.6 upon 2.4, this will be 1.5. After solution, this will be 3 by 2 and this will be 1.5. This is 2.4 divided by 2.4. This value will be 1. So अब यहाँ पे हमने क्या किया है? Divide with the smallest number. Divide with smallest number. क्यों? To obtain the simple whole number. बट द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे हमारे पास अब 1.5 आ गया. सो वी डोंट हैव टू रिप्रेजेंट द फॉर्मूला इन द
फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसे क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द होल नंबर। सो एक ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सो मल्टीप्लाई विद 2, इट मीन सारी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ द सिंपल होल नंबर इज 4, 3 एंड 2। ये हमारे पास जो नंबर आएंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। नाउ आई कैन राइट empirical formula is carbon 4 hydrogen 3 oxygen 2. so this is the required first part जिसमें हमसे पूछा गया था डिटरमाइन द सिंपलेस्ट फार्मूला। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करो। नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो गिवन है वेपर डेंसिटी गिवन है। अब क्या करें, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये एक फॉर्मूला है जो आपने ध्यान रखना है। सो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है 83, दिस वैल्यू विल बी 162। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 162, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट 162, 166। तो हमारे पास जो मास आएगा दैट इज़ 166, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे मॉलिक्यूलर मास पता लग गया, एम्पेरिकल फार्मूला पता है। नाउ आई कैन कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला मास। सेम वे जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं बाय एडिशन ऑफ द मास ऑफ एवरी एलिमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन कितने हैं 12, कार्बन का एक का 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 प्लस ऑक्सीजन का एक का कितना है 16 इंटू 2, ये हमारे पास कितना आएगा 48 प्लस 3 प्लस 32। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर आएगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 48, 3, 51 एंड 32, दिस विल बी 83। सो हमारे पास यहाँ पे जो मास आया दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला मास। नाउ वी नो द एम्पेरिकल फार्मूला मास एंड वी नो molecular mass. The value of n can be calculated. The value of n can be calculated. So how to calculate the n? N equal to molecular mass upon empirical formula mass. So what is the molecular mass? Molecular mass is 166 and what is empirical formula mass? This is 83. So this number will be 2. It means n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, that whole number is 2. So now we know empirical formula, we have to calculate the molecular formula. So molecular formula is equal to n into empirical formula. So molecular formula is equal to 2 into empirical formula. क्या है empirical formula? C4H3O2, that is C4H3O2. So molecular formula equal to C8H6 and O4. It is the exact formula of the molecule. Okay, क्वेश्चन में एम्पेरिकल फार्मूला पता है हमें, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एक्चुअली व्हाट इज द मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल पार्टिकुलरली कौन सा है। सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय यूजिंग सच कंसेप्ट। सो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज़ें एक साथ कर ली है कि हमें कोई डाटा इस तरीके से गिवन है जिसमें हमसे एम्पेरिकल फार्मूला भी पूछा जाए और हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो वेरी बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल कैन बी डन ईजिली। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द मोल कंसेप्ट. So that's it for this session. Thank you.